welcome back to the Global Channel, and today we will start with a shaking topic. So why I'm saying this shaking topic? Because today we'll start with earthquakes. Okay, so earthquakes. So what are earthquakes? The sudden release of energy inside the earth due to tectonic plates. Okay, so जब हमारे पास सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी एकदम से रिलीज हो रही है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, लाइक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ due to tectonic plates. Tectonic plates. So this is termed as earthquake. अभी what happens कि tectonic plates move करती हैं, tectonic plates move, तो वो एकदम से वो move करी. For example, we have done in our previous lectures कि move करी, एक से स्लिप पास होके गई या एक से सबडक्ट कर गई. तो जब एक दूसरे के सामने जब ये आते हैं, when they come face to face, तो क्या होता है, they collide with each other. So when they collide, they give a shaking effect. So that shaking effect is known as earthquakes. Okay, so let's see how many types of earthquakes we have. Okay, so this is the earth. So the earthquake which has the depth which is more than 350 kilometers. The energy which is released with a depth of or more than 350 kilometers, that is known as deep focus earthquakes. Deep focus earthquake. अब जिन सिस्मिक वेव्स की डेप्थ होती है अप टू अ हाइट ऑफ 350 किलोमीटर्स, जो एनर्जी रिलीज होती है एट द डेप्थ ऑफ 350 किलोमीटर्स, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट earthquakes. Intermediate earthquake. And जहाँ पे depth is up to 70 kilometers, and here at this point if energy is releasing, so this is known as shallow earthquakes. So we have three types of earthquakes. Shallow earthquake जिनकी डेप्थ होती है 70 kilometers, means the energy is released with a depth of 70 kilometers. Next we have intermediate earthquake कि जब हमारी energy at a depth of 350 kilometers पे release हुई है, and the very deep are known as deep focus earthquakes. One more thing, from where the energy is released, this point is known as hypocenter, or we can also say it as focus. And when this energy travels all around and it reaches at the surface, so this point at the surface, first point जहाँ पे आके ये meet करती है at the surface, this point is known as epicenter. And from here, this energy starts traveling on the surface in all the direction, like this. So this is known as epicenter. This is on the surface of the earth, and this is inside the earth जहाँ पे energy first time released हुई है, right? You can take the screenshot of this. Okay. Next we have, अब earthquakes को हमने देख ली है, अभी ये भी देख लिया कि at this depth हमें ये earthquake दिखता है. Now how to measure these earthquakes? We have some different kind of instruments.
some scales, sorry. So we have intensity scales and another magnitude scale. Okay. So intensity scale, for example, Mercalli scale and MSK scale. So these measures the intensity of the scale. This is an old idea now to measure intensity. Now we measures magnitude. Right? For example, this is the epicenter. यहाँ पे एनर्जी फर्स्ट टाइम सरफेस पे हमने विटनेस करी, तो एनर्जी यहाँ पे है, तो इसी पॉइंट के पास ज्यादा एनर्जी होगी एंड जैसे जैसे इसके पास एनर्जी होगी और जैसे जैसे दूर जाएगा द एनर्जी विल डिक्रीज, ऐसे द एनर्जी विल डिक्रीज। ओके, तो इसका इफेक्ट कम होगा और जिस पॉइंट पे हमने एनर्जी फर्स्ट टाइम विटनेस करी है इसके अराउंड थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होगा एंड इससे दूर इफेक्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिचर स्केल, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so now we have, types of earthquakes. Okay. So how many types of earthquakes? Yes, we have seen कि वो एक shallow होता है, एक intermediate होता है, and another is deep focus earthquake. Okay, but in this type we will do some plate boundaries. For example, divergent boundaries we have done. Next we have done convergent plate boundaries. And third we have done transform plate boundaries. Okay. So what we have seen in divergent plate boundaries कि what are the conditions कि एक तो rising limb होने चाहिए, जो मैग्मा है वो rising होना चाहिए एंड diverging होना चाहिए। तो जब वो राइज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो वो ऊपर एक डोमल अपलिफ्टमेंट कर रहा है। ओके, देन कॉन्टिनेंटल राइज हो रहा है, कॉन्टिनेंट जब राइज हो रहा है बीच में एक गैप बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ द लैंड मास हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस कि हमें यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स मिलते हैं दैट आर ऑफ द नेचर ऑफ शैलो एंड इंटरमीडिएट। दो टाइप के अर्थक्वेक्स मिलते हैं, शैलो एंड इंटरमीडिएट। डीप फोकस अर्थक्वेक्स कहाँ पे मिलेंगे? डीप फोकस अर्थक्वेक्स हमें मिलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में। फॉर एग्जाम्पल, वन ओशनिक प्लेट एंड अनदर ओशनिक प्लेट, तो ये वाली इसके नीचे सबडक्ट करनी है, तो जब सबडक्शन होगी ये डीप ट्रेंचेस में जाएगा, यहाँ पे जब इसकी मूवमेंट होगी तो यहाँ पे हमें earthquakes मिलेंगे in these trenches. So deep focus earthquakes are associated with trenches or the subduction zone. तो जहाँ पे भी हमें सबडक्शन होता हुआ दिखेगा वहां पे हमें डीप फोकस earthquakes मिलेंगे। Alright, okay. So let's see. Oceanic convergent, oceanic continental convergent and continental convergent plates. Okay, so let's see. OO convergent plates में हमें shallow earthquakes भी मिल सकते हैं, intermediate earthquakes भी मिल सकते हैं and deep focus earthquakes भी मिल सकते हैं।
deep focus. I'll write it as DF. Deep focus earthquake. क्यों? क्योंकि एक प्लेट is subducting under the another plate, right? O and C, oceanic continental convergent plates में which type of earthquakes will found here? यहाँ पे shallow मिलेंगे, intermediate and deep focus. And what's in the case of continental? क्या हमें यहाँ पे deep focus earthquakes मिलेंगे? No, not at all. क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी plate is not subducting under another plate, right? ये तो सिर्फ ऐसे आके collide हो रही है, हल्का सा fold हो रहा है, जिसके कारण हम fold mountains देख सकते हैं. तो यहाँ पे shallow earthquakes and intermediate earthquakes, not deep focus earthquakes, right? Next thing is in transform plate boundaries. ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में क्या है? ओ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज एंड सी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज. या तो दो ओशनिक प्लेट्स एक दूसरे को ऐसे स्लिप पास करके जा रही है, या दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर स्लिपिंग पास ईच अदर. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सबडक्शन नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी शैलो एंड इंटरमीडिएट. Here also shallow and intermediate earthquakes will be seen. Okay, you can take the screenshot of this. Okay. Next we have some other kind of earthquakes. For example, collapse earthquake means जब माइनिंग हो रही होती है तो उसके दौरान जो शेकिंग होती है, जो उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज अ कोलैप्स earthquake. Collapse earthquakes reservoir induced earthquakes or earthquakes due to volcanic activities. Or we can say earthquakes due to landslides. So these are further more types of earthquakes which we can see. Okay, now let's see the distribution of the earthquakes. Distribution of the earthquake. Okay, so the first part is Pacific Ring of Fire, or you can also say Pacific Belt. This is the region which I have told in previous lectures कि for example जहाँ पे हमें Aleutian Trench मिलते हैं, Mariana Trench मिलता है, Kuril Trench है, Japan Trench है, that region, that Pacific region is known as the Ring of Fire. यहाँ पे world के 70% of earthquakes are witnessed, right? Next we have that is Alpine Himalayan region. Alpine Himalayan region. And next we have Himalayan region. Okay. Sorry. Okay. So these are the regions जहाँ पे हमें earthquakes दिखते हैं, like shaking होती है regularly. So you can take the screenshot of this also. Okay. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे earthquakes हैं, and here in Alpine Himalayan region हमें किस type के earthquakes मिलते हैं? We can see shallow earthquakes and intermediate earthquakes.
हिमालयन रीजन में भी सेम है, शैलो अर्थक्वेक्स एंड इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स. एंड वन मोर थिंग दैट एल्पाइन हिमालयन रीजन है, यहाँ पे हमें वर्ल्ड के 20% earthquakes मिलते हैं. We can witness 20% of earthquakes in this region, and in Pacific Ring of Fire we can witness 70% of the earthquakes. So this is all about your earthquakes, in which we have done what is the meaning of earthquake, how many types of earthquake, and what are the scales जिससे हम उसको measure कर सकते हैं. For example, intensity scale we have magnitude scales, then we have done types of earthquakes, and then we have done distribution of the earthquake. So this was all for today's lecture, and if you like this video, so do share, like, comment and subscribe to the global channel. Till the time, take care and meet you in the next vlog. Thank you.